आज अपन जिस मैटर पे बात करने वाले हैं पे तो एक सबसे बड़ा जो इस वीक मैटर हो गया और जो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया ना फुटबॉलिंग वर्ल्ड के हिसाब से, भाई साहब मोरिनो को सैक कर दिया रोमा ने। सैक सैक उठा के भाई, मतलब एक दो मैच थोड़ा सा हालत खराब हो गई, बेचारा लोन प्लेयर से काम चला रहा, पैसा देते नहीं हो साइन करने के लिए, फट से उठा के सैक कर दिया स्पेशल वन को। So let's start with the Chelsea fan. Okay, I mean, very honestly, I haven't seen Mourinho's era at Chelsea. बस reels में देखा है मैंने. I have lived only for that. And yeah, I mean, I don't think any Chelsea fan would hate Jose Mourinho. तो I have a lot of respect for him. बंदा बहुत ही काफी cool है, काफी chill है. Instagram पे अपनी बेटी की ज्वेलरी शॉप मतलब प्रमोट करता है आदमी, फुटबॉलिंग भी सिखाता है. और I mean, I'm happy for, I was happy for him at Roma क्योंकि हमारे ही चेल्सी के बच्चे और लौंडे रोमा में खेल रहे हैं काफी सारे, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग टू लर्न अंडर गुड लीडरशिप. तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड गुड, बट आई थिंक रोमा का सेकंड सीजन विथ मोरिन्यो एंड थर्ड, आई थिंक This is third. So third season, and I think everyone knows what happens to Mourinho in his third season. तो अभी 9th place रोमा, आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, बट ठीक है, अब क्या करें. तो Daniel De Rossi has now joined in, but rather than me knowing anything about Daniel De Rossi, Mittul would know better about the Roma fan who's now taken over. But bad for Mourinho, I feel bad for him. I always like him no matter if I've not watched him live. तो बंदा काफी chill है, as I said. Yeah, same thing. मुझे भी लगता है कि मतलब Roma had a terrible season अभी so far. They have been, even after they've got decent signings, I won't say कि something enough to win Serie A. उतना तो level अभी नहीं है उनका, sadly, क्योंकि Inter Milan, for example, and even Juventus squad is very good. But हाँ, उनके पास इतने players थे, like you can give more, you can say, you can get more points on the road, और वो नहीं हो रहा था. और थोड़ा सा वही third season syndrome आ जाता है Mourinho का. He started like victimizing people in management, players. Renato Sanchez वगैरह ऐसे players आए इंजर होके बैठे हुए तब से. तो ये थोड़ी चीजें उसकी मतलब I think is wrong, but nothing justifies sacking because it's not like कि Roma is somewhere उसको हटा दोगे आप, कुछ और ले आओगे और आप एकदम से you will skyrocket your performance, क्योंकि आपको, और you need to understand like Roma has not lost, have won Serie A since a long time. 2001 में जीते थे, तो उसके बाद से वो जीते ही नहीं. और they were trophyless for a long time also. और यूरोपियन ट्रॉफी तो भूल ही जाओ. उसके बाद वो आपको बैक टू बैक 2 सीजन आता है, मतलब पहले ही सीजन में कॉन्फ्रेंस निकाल रहा है. उसके बाद he's like a, we all know that he's a crowd puller, होता है ही. Like वो आते से रोमा was mad. Like people started knowing कि रोमा का फैन बेस कितना तगड़ा है outside of it. Like people were saying कि हाँ Roma is a good team, टॉटी रहे हैं यहाँ पे, बट उनका फैन बेस सबको उतना नहीं दिखाता. बट अब लोग जानते हैं, now they're respecting Roma fan base all because of Mourinho. Now they know more players about Roma, and उसने वो जिताया, फिर उसका यूरोपा भी ऑलमोस्ट जिता दिया था. वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहे रेफरी के, ऑफ कोर्स एंथनी टेलर. तो बट स्टिल आई थिंक इट वाज एंथनी टेलर. भाई चप्पल मारो उसको पकड़ के प्लीज. It was एंथनी टेलर, और उसका तो रोमा पे मतलब he was going in the airport, तो उसके वाइफ पे भी मतलब और उसके बच्चे पे भी वो लोग बड़े रिमार्क्स दे रहे थे. तो उस चीज पे मतलब इवन दे वर फाइंड आल्सो, मतलब उन पे कि यार रोमा फैंस की क्या कर रहे हो, ये सब उनके फैमिली पे नहीं जाना चाहिए. एनीवेज, तो ये तो चलो है, बट आई फील लाइक यार मैं भी काफी मोरिनो लाइक कर हूँ. मुझे हमेशा से उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा है. लाइक समवन, अगर आप उसको अपना बेस्ट दो तो मतलब वो दुनिया से लड़ लेगा आपके लिए. इस टाइप ऑफ का है. अगर समवन हु एग्रीज टू व्हाट ही इज सेइंग कि क्या क्या समझा रहा है आपको, अगर वो कर दोगे तो उसके बाद मतलब ही इज लाइक गोइंग टू फाइट एवरीवन. सेकेंडली, ही ऑलवेज टेक ब्लेम्स इन मीडिया. वो ऐसी बेकार चीज बोलेगा ताकि सारा अटेंशन उस पे आ जाए, और टीम ने जो हगा है. बट वन स्टैट, आई थिंक ही गॉट 6 रेड कार्ड्स इन रोमा, लाइक 2.5 साल में. ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स. सीरिया में ज्यादा किसी ने रेड कार्ड नहीं लिए 3 साल में जब से वो आया. तो वो एक नई चीज उसने की. बट एनीवेज, ही लाइक अच्छा था उसका टाइम. एंड आई वुड हैव सेड कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो ही रहा था एनीवेज. बट आप उसको एटलीस्ट जून तक का टाइम देते.
mid-season you are doing it, it might not be something like worth, I would say. And then De Rossi is coming. आ गया कल उसका first match था, they won also. De Rossi is someone who is like the second biggest legend you can say of Roma after Totti. He's also born and bred यहीं पे पैदा हुआ है, शहर को पूरा जानता है, क्लब को पूरा जानता है, यूथ एकेडमी से लेके एंड तक काफी खेला. उसका फेमस वो टैटू, if you guys know, फ्लाइट टैकल वाला उसके पैर पे एक है कि कॉशन के अंदर एक स्लाइड टैकल दे रहा है. That is right, I remember. Got it, yeah. तो कल तो like they played well, but it's too early to judge, क्योंकि वो भी ना उसके लिए अभी बहुत बड़ा स्टेप है. इससे पहले इतनी बड़ी टीम को उसने कभी नहीं किया है. असिस्टेंट कोच रहा था वो, यूरोज में भी इटली का असिस्टेंट कोच था अंडर मैंचिनी, तो he won यूरोज फॉर इटली, you can say. But हाँ, let's see. वैसे तो 6 months का ही है, and he said this one good line कि उसने ये भी देखा कि whatever they're paying, he said in the interview कि as soon as he got a call and they said कि we want you to be the coach, he said I am in, and he didn't even ask. बाद में कॉल कट गई and then he realized अरे पैसे तो पूछे नहीं भाई कि क्या मांग रहे हो, क्या दे रहे हो. तो क्राउड तो रहेगा स्टेडियम में, क्योंकि एक लेजेंड आ रहा है एज अ कोच. लाइक इमेजिन यू गाइस, फॉर एग्जांपल फ्रैंक लैम्पार्ड एट चेल्सी, वही चीज हुई है, सेम कि फ्रैंक लैम्पार्ड एकदम से आना, क्योंकि फ्रैंक लैम्पार्ड इज नॉट अ बिग गाय, तब शायद डर्बी काउंटी का कोच रहा है. डर्बी काउंटी ही डिड गुड, बट यू कैन नॉट से क्योंकि वो लोअर टियर की है. सेम यहाँ पे उसने स्पाल को करा, स्पाल में तो उसने वो भी नहीं किया, बट वो लोअर टियर पे. बट हाँ, एक लेजेंड आया ना, लेजेंड को कोच, लाइक वी हैव ऑलवेज इमेजिन्ड कि हमारा कोई लेजेंड हमारे क्लब को बाद में आके कोच करे, तो इट्स जस्ट डिफरेंट. तो वही इसका. यार मोरिनो के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, मतलब मेरे लिए. मैं एक बात जानता हूँ कि हिज नेम इज जोजे मोरिनो, और वो जिस भी क्लब में, जिस भी सिटी में जाता है, उस सिटी के फैंस, उस क्लब के फैंस को जगा देता है. मतलब यू नो, अगर आप 6-6, हाँ मतलब उनको उनको इतने मतलब पैशनेट बहुत आदमी है ना, मतलब होता है ना, पैशन एक होता है आपके स्पोर्ट्स के लिए. बट मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि व्हेन मोरिनो लीव्स, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत गंदे से उसको अगर सैक करते हैं, यूनाइटेड में भी हुआ, चेल्सी में भी हुआ, और टॉटनहैम में भी हुआ, जिसको उसको जिस तरीके से ऑलवेज अगली, बहुत अगली, और पूरे फैन बेस के साथ तो जो मैटर होता है वो होता है, बट जो बैकरूम, जो टीम का मोराल होता है भैया, ये वही मोरिनो है. जब उसने हमको सैक, जब हमने उनको सैक किया था सेकंड टर्म में, तब उस सीजन वी एंडेड अप 10th, और हमारी हालत खराब थी उस सीजन में. ये अच्छा लगा था कि टॉटनहैम को नहीं जीतने दिया था हमने. लेस्टर वन दैट सीजन 2015-16, एटलीस्ट दैट वाज द सेविंग ब्रेस फॉर अस. बट मतलब कहने की बात है, अरे भाई दैट लेजेंड भाई, वो सब चीज एक तरफ और टॉटनहैम को ना जीतने का गोल एक तरफ, दैट्स अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग या फॉर मी. तो खैर चेल्सी के लिए जैसा भी उसका, जो भी उसका टाइम रहा, उसमें भी मतलब पहले भी उसने बिल्ड किया. वी नो द स्टोरी, यू नो, डेडियर ड्रॉग्बा कैसे साइन किया उसने बोला रोमन, यू जस्ट पे, you don't ask question, just pay for this guy. I just want this guy in Chelsea. He came and we know what Didier Drogba is. So उसका ये, हाँ, बट उसकी ये भी परख बहुत खराब रही है कि सलाह और केडीबी उसी के टाइम में गए हमारे क्लब से बाहर. तो एक यू नो उसका ऐसा यू नो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सीन है उसका, है ना. अच्छा, रही बात, हाँ, बहुत ही गंदा है, बट मतलब no matter what you say, Chelsea के लिए की ट्रोलिंग हमेशा लाइफ टाइम रहेगी. that he led to, oh my god. इस सेंचुरी के दो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, नॉट इफ सेंचुरी बट लास्ट डेकेड मान लो. पीएल में दे हैव डन इट. उन्होंने खूब रिकॉर्ड तोड़े, खूब वो किया है. अब इन दोनों को इफ यू सी एज अ चेल्सी फैन कि आपके दो बड़े राइवल्स के लिए खेल रहे हैं, डे इन डे आउट, स्कोरिंग एंड असिस्टिंग, सपना टूटा है वो दिल. Last 5-6 seasons में even people who don't follow PL religiously, अगर वो FPL भी खेलते हैं तो उनको पता है, हाँ, साला और केडीबी इन दोनों को टीम में रखना है. एग्जैक्टली, सही बात है. हालैंड तो अभी आया है, बट लाइक पहले से It's been 5-6 more than 6 seasons. Yeah, indeed. फिक्सचर प्रूफ लोग हैं, फिक्सचर प्रूफ की यू हैव टू टेक एंड कैप्टन भी कर दो. मोस्टली हर मैच में आपको पॉइंट देंगे. और अगर ट्रिपल कैप्टन वाला टाइम आ रहा है तो यही लोगों पे साथ में जाओ, जो होता है ना, यही पीरियड, ये वाला, हाँ, ये पॉइंट आपको लाके देंगे. खैर, तो टॉकिंग अबाउट मोरिनोस टाइम एट रोमा, आई विल जस्ट कंक्लूड वेरी जल्दी, है ना. तो मोरिनो का टाइम, यू नो, मैं उतना सेरिया फॉलो नहीं किया. जो थोड़ा बहुत भी मैंने फॉलो किया शुरू टाइम में भी, जो एंड ऑल आफ्टर मीटिंग मितुल ओवर ऑन क्लब हाउस एंड यहाँ पर, जो थोड़ा सेरिया में फॉलो किया,
वो रोमा के मैचेस के लिए करा, और थोड़ा रोमा के बारे में जानना चाहता था। वो क्यूरियोसिटी इसलिए थी बिकॉज मोरिनो वहां पर था। मेरे लिए भाई, मैं अपनी अगर एक एज अ मोरिनो फैन बात करूं तो और रही बात लेगेसी है यार, वो आदमी ने आपने यूरोपियन चैंपियनशिप, जो कोई सी भी यूरोपियन चैंपियनशिप 40 साल में नहीं जीती थी, आपने 40 साल बाद जीता, उसके वजह से वो आया। फंडिंग्स वगैरह का कुछ दिक्कत था, मितुल ज्यादा क्लियर करेगा। इस साल शायद वो लोन के प्लेयर खिला रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ के, है ना। कुछ बजट तो रोमा का इतना है नहीं, मतलब इटली हाँ, के मोस्टली क्लब्स के पास बट पैसा उस नहीं है। इवन हैविंग दैट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज होने के बाद भी ही केप्ट द juices flowing of that club. That was स्मॉल डी incredible. नहीं यार, स्मॉलिंग को स्मॉल डी नहीं बना दिया उसने। बताओ, Smalling क्रिस was स्मॉलिंग the भाई, unit- भाई प्रीमियर लीग रिजेक्ट है वो, उससे प्रीमियर लीग winning a रिजेक्ट है European वो। title with Chris Smalling, Chris then I Smalling. think Hey, he was with it's United, good isn't it? business. Chris Smalling. He was with United. अरे Yeah, भाई, so- United रिजेक्ट को मैंने मैंने Every time celebrate say किया है। मैंने सेलिब्रेट किया है जिस दिन स्मॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। small D नहीं बन गया, he's not Smalling, he's small D नहीं। Yeah. इसलिए। And then he has like likes of our guy Tammy Abraham, जिसको उसने देखा होगा एक यूथ लेवल में, देखा होगा Tammy Abraham को चेल्सी में, Brilliant. है ना। तो वो वहां पर है, वहां भी वो गोल मार रहा है। टोमोरी तो सॉरी एसी मिलान में, खैर मैं भूल गया था। खैर सो डिबाला मतलब जो at that time injured था। डिबाला इज देयर इंडीड। तो Yes, that pool dude, we were talking about it. Pool है यार, डिबाला कहाँ से कहाँ, यूवेंटस से रोमा चले गया, मोरिनियो ने बुलाया। या विशाल, बिकॉज हम लोग ये फिनिश कर रहे थे लाइव चैट, नाउ we would like to know that what is your feeling about Mourinho and Mourinho sacking at Roma and Mourinho in general, कि आपको भी उसने बहुत brief time के लिए कोच किया है, so I would just like to know your take. तो हमारा tagline of our channel is we might cross the line, which means that we might have some controversial takes. So here's our first one. I am not that big of a Jose Mourinho fan. The people on this stream know that. Of course, United fans वैसे भी थोड़े salty हैं regarding Salty. I have barely seen. हमेशा रहेंगे like Jose Mourinho again. After United, the most saltier fans are Arsenal. That वो आया ही नहीं ना वहाँ, वो आया ही नहीं वहाँ, No, उसको regarding मतलब ही नहीं है। Mourinho, regarding जहाँ पे Mourinho गया है, जहाँ गया है, हाँ। हमसे ज्यादा बनता है because Mourinho ने like the way Mourinho has treated Arsenal is horrible. But so I mean, I was not a big fan of Mourinho coming to United because of the exact reason that we know कि third season syndrome. He's not a long term, and for a United fan especially, like the start we have seen, like we have always looked at managers for long term. The idea was always to find the next Alex Ferguson. Maybe not the best idea, but the idea was always to find the next Ferguson. And we tried Moyes, didn't work. We tried LVG. I think we could have given him a little more time. But then the moment Mourinho came in, I knew that, okay, 2-3 seasons ke baad, he's going to get the sack. It's, Mourinho's legacy. So I was not a very big fan of that. And he came in United, he won without doubt the most, the best manager of United, trophy-wise and everything. Especially, he was our last European trophy, Europa League. And Correct. Community Shield जीता था हमने, so and League Cup, that was our treble, Europa, Community Shield and League Cup. But that's what exactly happened, right? He had a fight with some of the players. Luke Shaw, Paul Pogba is a different entire scenario. That's like two toxic people fighting each other. It's never gonna end well. But and he left, and that happened. After that, he went to Spurs. Okay, now here's where I go into a little bit of Mourinho empathy, that his sacking at Spurs was absolutely idiotic. You don't sack him just before days Still before the final. clueless. He might be doing Still anything. You don't sack him days before the final, Yeah. especially He if might you're have lost 9-0, तब भी चलता, but come on guys, it's you don't Jose. sack Jose Mourinho before a final, especially if you're a club who hasn't won jack shit in a decade. Now coming to Roma specifically,
I mean, Roma, Mourinho, I would have said, like, the moment he joined, I would have said not a great combination, because I know Roma doesn't. I know very few things about Roma as the club. What I do know, they don't have the money, and Absolutely. taking Mourinho in a club which doesn't have money is not the best of choices, especially for trying to rebuild. Correct. But पैसा I मांगता है, would उसको say signing मांगते हैं. the passion that Mourinho has shown is something I have not even seen him give at Chelsea or United. Absolutely. He Because has taken it to a new level. मतलब Yeah. कुछ अलग ही नहीं है. maybe because it may be because it is being shown more via Instagram. पहले social media था नहीं. Now Jose कम था. Mourinho as a person, what he's thinking, we are able to see more via Instagram. But the level of passion you see in his posts, in his post-match conferences, in the way he's treating the young people, and Mourinho का एक बहुत बड़ा ये आया था कि Mourinho is not someone who has who is able to catch up with the times. Yeah. Because the players these days, this was a very specific Exactly. point that was raised when he got sacked at United, that Mourinho is not someone he's not a good manager for these days because he can't coddle young people. And footballers these days do need coddling compared to when it was at old days. He showed that he can do it. Where there was love needed for the Roma youngsters, he showed love. He was ready to take he was ready to care for them. He was ready to take them to the next level. He introduced a lot of youngsters into the squad. So he was doing something. But I mean, for whatever reason, it was not turning into goals, and it was not turning into wins, especially in the league. Fifth, ninth, as of now. But the last two, fifth, right? Yes. And they wanted to take it to the next level. Now, I do find this sacking is a bit weird because as Roma, okay, you sack Jose and then you get who? De Rossi, I mean, great player, yes, but what has he done? Even when Chelsea got Frank Lampard, they were on a transfer embargo, so they didn't have Correct. any money they didn't have money to spend. So any manager would be a little cautious to come join Chelsea. Frank Lampard is a Chelsea legend who did great at Derby County. This just the season before that. Derby County came fourth, and they lost a spot to come into championship because they lost that championship playoff to Leeds. Correct. So Correct. Lampard was actually a great choice. De Rossi, meanwhile, has not done great at Spal. Correct. 18th पे था. Like he brought them to 18th and then he And left. then he got मतलब sacked. Not So like he sacked them. Yeah. why would you get him to sack Mourinho? I mean, big words from me, given that we got in Ole after Jose. But Correct. but Exactly. I mean, it's still a bit. Yeah, I mean, I don't know how it was in Roma because I don't follow Serie A as closely. But I don't think it was that bad an Maybe it issue. wasn't an informed decision. Yeah, it wasn't. It didn't look as bad as it did at United or at Chelsea or at Spurs. Yeah, because recently only he said he is thinking about extension in June. Like they're talking to United or at extension. Spurs, this was never the scene. It turned very ugly at the end. Very Yeah. ugly at the end. It was not ugly at all. I don't know. Maybe it's a decision where Mourinho wanted some money. The admins, like the footballing heads, didn't want to give it, and there something didn't work out, and they said, okay, no, we can't keep you anymore because it is not working out. I don't know what is happening, but yeah, it's kind of sad.